Assalamualaikum, I am Kashim Machine, and today we are going to start our first main lecture on UP taxation and practical filing course. So, in this lecture, we are going to discuss about some two things that are necessary, and after that, we will go over Xero software. So, the first one is director loan account. What is director loan account? A director loan account records money that passes between a company and its director, other than salary, dividends, reimbursed business expenses. अब डायरेक्टर लोन अकाउंट क्या अकाउंट है? इसमें जो डायरेक्टर जो पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर, वो हमारा एज एन लाइबिलिटी बन जाती है कंपनी के ऊपर। और जो कंपनी से पैसा निकालता है डायरेक्टर, वो रिसीवेबल बन जाती है कंपनी के लिए, और पेबल बन जाता है डायरेक्टर के लिए। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हम असल में कर क्या रहे हैं। So, so we will take a simple example like director loan account. What is a director loan account? What is DLA? So, it's a temporary account. Transaction with the company is temporarily taken place. एक्चुअली ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसमें अंदर डायरेक्टर के ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी के साथ, जिसमें उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको डायरेक्टर लोन अकाउंट कहते हैं। अब डायरेक्टर लोन अकाउंट नेचर वाइज मेजरली हम इसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अब डायरेक्टर लोन अकाउंट होता क्या है? इसमें ये होता है कि इफ लाइक इट्स वन इज अ कंपनी, एक कंपनी डायरेक्टर use company money for their personal purpose। अब जब डायरेक्टर ने पैसा जो है अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो अब डायरेक्टर जो है वो लायबल है कि कंपनी को पैसा दे, और डायरेक्टर जो है कंपनी का रिसीवेबल है। लाइक इसकी अगर जनरल एंट्री बनाए तो क्या जनरल एंट्री बनेगी कि डायरेक्टर ने पैसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी डेबिट रिसीवेबल डायरेक्टर लोन अकाउंट। डेबिट हो जाएगा डायरेक्टर लोन अकाउंट। क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास कैश या बैंक। अब क्यों? पैसा जो है वो कंपनी से चला गया डायरेक्टर के पास, आगे डायरेक्टर ने उसको पर्सनल यूज किया। कंपनी के पैसे थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, कंपनी और जो उसके ओनर है वो डिफरेंट पर्सन है। तो इस वजह से जो उसने पैसे जितने का भी आउट आउट हुआ है पैसा, वो जो है रिसीवेबल बन जाएगा कंपनी के अकाउंट्स में, और उसका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। देन वी हैव सेकंड थिंग we say like directors put money in the company accounts। अब डायरेक्टर जो है वो पैसा डाल रहा है कंपनी के अंदर। इट्स नॉट शेयर होल्डिंग टाइम, इट्स नॉट वो इक्विटी फाइनेंस डाल रहा है, इट्स लाइक वो टेम्परेरी कंपनी के अंदर पैसा डाल रहा है, और वो कंपनी को एज अ लाइबिलिटी पे कर रहा है। अब कंपनी के लिए क्या ट्रांजेक्शन होती है? कंपनी के पास आएगी डेबिट कैश, कंपनी इंटर क्रेडिट वी हैव डायरेक्टर लोन अकाउंट, इट्स आवर लाइबिलिटी। सो इन शॉर्ट, हम डायरेक्टर को एज अ सेपरेट पर्सन कंसीडर करते हैं या एज अ सेपरेट सप्लायर्स करते हैं, जिसके साथ जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर हम रिसीवेबल या पेएबल की लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो उसको हम डायरेक्टर लोन अकाउंट, टेम्परेरी, इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट वेयर द ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर टेकन प्लेस, तो उसको डायरेक्टर लोन अकाउंट कहते हैं। इसमें जो डायरेक्टर लोन अकाउंट की जो नेचर रखी जाती है, वो लाइबिलिटी अकाउंट रखी जाती है, क्योंकि मोस्टली डायरेक्टर जो है कंपनी में पैसा डाल रहा होता है और कभी कभार निकाल रहा होता है। सो इट्स द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डायरेक्टर लोन अकाउंट, द अकाउंट वेयर वी कैन डील with director taking money in or out of the business. So it's called director loan account. So director used company money for their personal purpose, so it's receivable for the company.
Director put money in the company accounts, it's a liability for the company. So that's the basic concept of director loan account. After that, we will move toward a new thing, that is entertainment expense. So there are two types of entertainment. One is entertainment expense on staff, which is like we are paying our employees entertainment expense. So on the staff entertainment, the VAT is reclaimable. Like we can reclaim the VAT on our entertainment expense that we pay for the staff. While if we pay for the staff and the annual spending per person is greater than 250 per employee, then it will become a chargeable benefit for employees. It's under the income tax. Like अगर आपके 250 से ज़्यादा का आप अपने एक एम्प्लॉय जो है अपने पर पर्सन को इंटरटेनमेंट या इस तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड करता है, तो वो जो उसकी अमाउंट है वो उसके ऊपर टैक्सेबल बेनिफिट बन जाती है उस एम्प्लॉय के लिए, लेकिन जो वैट है उसके ऊपर वो रिक्लेमेबल है. देन वी हैव वैट ऑन कस्टमर एंड सप्लायर. लेकिन अगर हमने कोई मीटिंग कोई इवेंट रखा उसके ऊपर हमने वैट हमें चार्ज किया गया इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर, तो वो नॉट रिक्लेमेबल है. हम उसको रिक्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट ओवरसी कस्टमर. कि ओवरसी कस्टमर जो है वो इज नॉट रिकवरेबल. ओवरसी कस्टमर जो है वो रिकवरेबल है, जो कस्टमर लोकल कस्टमर है वो रिकवरेबल नहीं है. सो इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक VAT on staff entertainment is reclaimable, but the VAT on local customer and supplier entertainment is not recoverable. The VAT on overseas customer is recoverable. So that's the basic thing. Uh, we have discussed the VAT topics and the VAT basics. So today we are going to start our zero setup. So we will simply go to zero. Wait a second. So we will simply go to zero. So I will write the zero login. So we will create a zero setup today, and then we will discuss about further. So I am creating zero account. हम zero account ना लेते हैं. So it's like three people consulting, phone number plus extra. Use location, we will say United Kingdom, and read. So that's like we will verify and then we will continue. So now after verification of your Gmail, we will start adding our business. So I will add it's three people consulting. I will add so the industry. So we are going to discuss CIS scheme in our course. So I will select a construction industry in that. House construction. I will say I am building non-designer building construction. United Kingdom. Business type. It's a limited company. And we are going 31st March is our financial year end. Do you have employees? Yes, we have employees. Are you already VAT registered? So we have to calculate VAT. So we will assume that we are VAT registered. And so I will say none. I am just starting, and let's start our trial. So अभी हमसे पूछ रहे हैं हाउ यू मैनेज योर अकाउंटिंग टास्क. आई यूज एन अकाउंटेंट और बुक कीपर कर लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर टू रन योर बिजनेस. So I will say no, and then I will say other, or you can select anyone. So that's the basic sign up in Xero. After initial sign up, we are going to the setting of the Xero.
Setting of the reserve would be in three people consulting, and there you can see your setting. Why we are going to setting? So we have to initially set up some things. So first we will go with organization details. So we'll check it out. So आप इधर अपना logo डाल सकते हैं जो भी आपकी कंपनी का है. So I will simply put a logo on our actually it's figure. So leave it. So company registration number, organization description. You can add your contact information like your address, number, and all the stuff of your company. So when you invoice, so it will be automatically added. So the next thing we are going to do is after the basic organization detail is users. In a user, you can allow different multiple person to use your account. So that's our user. It's show that I am the user. So you have to simply select on advisor, not on standard. Okay. So because something are restricted on standard module, so you have to select it to the advisor from the permissions. So it's the next step, and after that we are skipping subscription and billing connected apps. It's nothing invoice setting. So there we have invoice. We are only doing some important things that are necessary. Don't waste time on additional things. So we invoice. So in order to have it's like your invoice and provide you the setting to change things. So there you can edit the information, like you can add the country, you can add the contact name, remove the contact name, and their brand styling options are there. Which color do you want? So I will say I red one. So these are the things. So you can edit your sale invoice from there. Then there are payment, credit card, debit card, which you want. So it will be added there. Like it's, I will add a credit and debit card. So you can say it's added there. And the next thing, you can change your business details there and the customer details, brand standing, like all the formatting of the sale invoice you can done here. So it's basically invoice. So we are not changing because we have nothing to do with like this thing. And you can upload your logo on the invoice and that's all. हम जो है अपनी जो सब मीनिंगफुल चीज़ें हैं वही करेंगे क्योंकि ये इट्स सिंपल. आप जो भी आपको बेहतर लगे, अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो सिंपल, आप इसमें सारे ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं, आप जो मर्जी चाहे उसको कर सकते हैं. इट्स लाइक वेट अ सेकंड. ओके, setting, and then so we will simply go to financial setting. So then you can select your VAT scheme. So we are going with cash rate scheme. So I am going to select the cash scheme in my scheme, VAT period. So we will select our VAT period. It's like quarterly, and then VAT number. So it will be a VAT number, but we don't have. For sale tax exclusive, for purchase tax exclusive, you can change it, like you can take it to tax inclusive, no tax. So automatically they don't show a tax. Then the main thing जो आपको बतानी थी वो CIS स्कीम के बारे में थी. हमने अपना वैट स्कीम कर ली, कैश स्कीम कर ली, क्वार्टरली कर ली. देन वी हैव, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारी सेल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली जो वो टैक्स एक्सक्लूसिव हो, मतलब जिसको भी हम इंटर करें तो वो उसको टैक्स एक्सक्लूसिव ट्रीट करे, टैक्स इंक्लूसिव ट्रीट ना करे. So it's a default. You can change it. Then अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इधर अपने आप को ट्रीट करें CIS, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कीम. It's a scheme for the subcontractor and the contractor. We will discuss it later on, like when we start working on it. But for that, I am currently treating myself as a subcontractor. We need a UTR, I think, and deduction rate. We will discuss that too. We are selecting 20%, and I think they may work it
UTR needed. So 1, 2, 3, 4. Hmm. We don't have a practical UTR. So that's हमने डेमो UTR डाल दिया. It's not a real UTR. So once से लेकर 9 तक as 0 it's a 10 digit. और फिर हमने यहाँ पे सेव कर दिया इसको. So it's like हमने CIS स्कीम हमने अपने उसके अंदर रिकॉर्ड करना इंटर कर लिया है. Then there is a फाइनेंशियल 31 मार्च है तो हमने 31 मार्च रखा. लेकिन अगर आपने चेंज करना तो मैनेज फाइनेंशियल ईयर एंड पे गए and you can simply update and you can edit the end of the financial year. So 31st March is okay for my purpose, and that's all. And then we are going to have a opening balance setup. So for opening balance you simply have to go again on setting, and there is a conversation balance option there, conversion balance. So there we this is the opening balance opening adjustment. So we are going to enter some opening adjustment for that purpose. So let's start with that. So there I have a demo balance sheet. So we are going to add that balance as our opening balance. So we'll simply go toward it. I will share you the Excel sheet so you can also add it. So I can simply actually what's the issue? First of all, I am going to check that we have the accounts in our chart of like हमें चेक करना है कि हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ये सारे अकाउंट्स हैं या नहीं है. अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में नहीं है तो फिर हम उसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे. So I will simply select. So we have sales and interest. I will check the interest का अकाउंट बना हुआ है पहले से. Interest income भी आ रहा है. Okay. And then we have storage expense. So we don't have a storage expense, so I will simply create a one account tab. It's an expense, so in where you can select the account की type क्या है. So it's an expense, so I will simply select it's an expense. I will go give the code 1410. You can simply delete the remaining accounts in chart of account and create your own with your coding, but I am not doing that. So like I am only creating a new account with these code, as we are going to discuss later on our annual account. So there we will do something like we will adjust the codes. Okay, so यहाँ पे हम स्टोरेज एक्सपेंस लिख दिया. हमने अपना एक्सपेंस कर दिया. 20% बैट ऑन एक्सपेंस हमने कर दिया. इसको हम फिलहाल 0 कर देते हैं क्योंकि फिर हम इसको चेंज कर देते हैं. दोनों VAT हमने कर दिया है. इट्स लाइक हमारा स्टोरेज एक्सपेंस क्रिएट हो गया. एंड देन वी विल वेजेस. हम चेक करते हैं वेजेस का अकाउंट है डायरेक्ट वेजेस. इसे डायरेक्ट कोस्ट ठीक है. एक्सपेंस की हमारे पास बन गई है. एंड देन वी हैव डायरेक्टर पेंशन. इट्स आल्सो अवर एक्सपेंस. सो डायरेक्टर pension. So we don't have account with director pension, so we will simply create 012. Oh sorry, it's account tab. हमने अपने account tab लिखनी है. So it's an our expense. So I will write it as say 012 director pension account. I will write director pension. डायरेक्टर पेंशन हमने ऐड कर दिया. उसके बाद हमने वैट उसमें नो वीएटी सिलेक्ट कर लिया. एंड दैट्स इट. इसके बाद हम ट्रैवल को देख लेते हैं. इट्स हमारे पास ट्रैवल नेशनल इंटरनेशनल कोई भी चल सकता है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एंड यूज ऑफ प्राइवेट रेजिडेंस 3190.
Okay, so we don't have private residence account, use of private. So I will come create an account. So it's also an expense. I will give it the code of 3190 and use of form, select no VAT, and save staff welfare expense. And then there are other 3050, then there's staff welfare, and it's okay, VAT, and it's okay. Computer software, IT software and consumable, it's an expense account already there, and we will check insurance. Insurance is there, so printing, it's already there. So after telecommunication, telephone and internet, it's almost the same. Then we have a site cost. Uh, there is no website cost. So I will simply add the following thing and we will start our video after that. So